Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Ranjit. Good morning, Varun. Good morning, Nilesh. Keep the charts clean. We'll start in 2 minutes. Starting with gold daily time frame, right? What a move, huh? आज भी और कल भी एंड कंटिन्यूटी में परसों मीन्स कल ही बोलते हैं ना, कल के लिए भी, हाँ, कल के लिए भी सेम रहेगा मूवमेंट. Starting with daily time frame, this was our previous demand. With the previous demand, ये हमारा inducement range था. इंड्यूसमेंट रेंज कितना, जितना हमारा मूवमेंट ऑफ अलोकेशन है उतने का ही रिजेक्शन आपको कंटिन्यूटी में दिखने को मिलेगी. पोस्ट कंटिन्यूटी वी गॉट अ रिट्रेसमेंट, पोस्ट रिट्रेसमेंट अलोकेशन, राइट. यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हुई थी. डिमांड कंप्लीट होते होते नेक्स्ट मूवमेंट अलोकेशन 150% से रिजेक्शन अलोकेट हुआ था. विद द रिजेक्शन अलोकेशन, what is the next steps that we'll be following? Allocating the movement structures. इस पॉइंट ऑफ एक्शन में ये मेरा सप्लाई एंड जितना मेरा प्रीवियस एक्शन प्लान में यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्रिएट हुआ था, दैट विल एक्ट एज माय करंट डिमांड. विद द करंट डिमांड, मार्केट कंटिन्यूड द मूवमेंट. With the continuity, this is the structure one. With the structure one, multiply it and allocation, right? We had a rejection from 150% at the state. With 150% rejections, what are the next steps that I will be looking and following through? Yes. So 150% rejection state के साथ market movement continuity की थी. With the continuity of the movement, what are the next steps that I'll be following at the current stage? ये मेरा previous retracement point था. This will act as my current retracement. With the current retracement allocation, exact rejection लेके continuity में गई थी. So I'll take this supply as the current plan of actions and I'll allocate it post the retracement point. Right? जैसे ही ये retracement allocate होता है, what are the next major things that I'll be following at the current state? The next current thing that I'll be following at the current state is looking for an execution of mathematical numbers. Right? Let's do the math. To start with, this is my swing low, this is my swing high, this is my retracement point. Okay? Swing high, retracement, and low remains the same. Right? Let's do the math. The swing high at current state is 2930.708 minus 2832.471. What is the formulative number? The formulative number is at the current state of 98.237. What is my retracement value at the current state? The retracement value at the current state is 2879.072. Direction is bullish, plus formulative number, which is 98.237 into 1.618. The target is 3192. So let's look for an allocation of intermediate ratio at the current state to 3192.364. So this is my next plan of action of execution, जहां से market reverse होने वाली है. यहाँ तक हम होल्ड करेंगे ट्रेड्स को with the precisions of giving anything to the markets and not sitting in the opposite direction, right? इसी point of interest के साथ you will see the next retracement point, else no. Am I clear with the daily time frame?
Post daily time frame, what are the next steps that I'll be following at the current state of actions? I'll come down to 4 hours to look for the next. In 4 hours, the market is in the directions of the movement. How do you look into the perspectives of the current angle plan? Current angle plan के हिसाब से this will be acting as my current supply with the current supply multiplied version post retracement point. Do we have rejection? Yes, we do. Retracement कितना लिया था मार्केट में? जितना हमारा पीओआई रेंज का एक्शन पॉइंट जनरेट हुआ था उतने का ही मूवमेंट अलोकेशन यहाँ पे दिखने को मिली थी विद दिस कंटिन्यूटी ऑफ द रिजेक्शन एंड द मूवमेंट अलोकेशन राइट जो हमारा प्रीवियस सप्लाई पॉइंट ऑफ एक्शन है दैट विल एक्ट एज द करंट with the current point of interest. Did the market tend to take the rejections? Yes, the market took the rejections and continued. So in this scenario, this is my last retracement point. This will act as my current. With the current retracement point, the entire movement structure will be taken under the consideration at the current state and will be kept post the retracement area. Right? So London session tak your target could be somewhere around 3158. Then we'll be looking for the next point of actions into the execution to the next level. Right? If we look into the structure of allocations, ये हमारा 4 hours का target है, post 4 hours target. If I multiply it, 150% is my mathematical number of daily time frame. Right? जैसे ही ये हमें मिला, what are the next steps that I'll be looking? The next steps I'll be looking is in 1 hour. Right, what is 1 hour indicating towards us? The 1 hour is indicating a current movement structure of rebuilding allocation. मतलब हर एक स्ट्रक्चर में हमें ब्रेक थ्रू ऑफ प्रिविलेजेस दिखने को मिली है. ब्रेक थ्रू ऑफ प्रिविलेजेस मतलब अंडरस्टैंडिंग वेयर एग्जैक्टली द मार्केट विल टेंड टू गिव द मूव. Right, allocation perspective, we had a wick creation, wick creation, wick creation, wick creation, wick creation, damn. कल के दिन हमने ये ट्रेड कैप्चर किया था शॉर्ट के लिए. उसके साथ 1 आवर में हमें वॉल्यूम चेंज ऑफ इंडिकेशन दिखने को मिली थी. सो यहाँ पे क्या दिखता है हमें at the current state of actions? We have a high spike in volume. When there is a high spike in volume, what does the market tend to do? The market tend to take a reversal from the plan of action. जहाँ पे रिटेलर शॉर्ट के लिए देखेंगे हम ऑपोजिट डायरेक्शन में. Right, with the high volume we had a wick generation. With the wick generation, market tend to continue in the structure. Execution point of analysis कहाँ पे build out में दिखने को मिला था हमें, जहाँ पे point of interest हमें S2 B2 setup के साथ execution मिली थी. 1 2 3 execution. Right, some people got entered into the trade in 15 minutes, but as per the analysis the market is still in the structure. Right, is structure ke sath what are the major things that we'll be following at the current state? This will act as my swing low, this will act as my swing high, this will act as my retracement point. Let's do the math and check where exactly did the market tend to take the reverse until where exactly the market will go. राइट, यहाँ पे स्विंग है आके 3127.180 माइनस 3100.443. The formulative number is 26.737. What is the retracement value? 3111.607. Direction is bullish plus formulative number 26737 into 1.618. Where is the target that we are having at the current state? The current targets we are having at the current point of action is 3154.867. Right, exactly this is my level of rejection of 100% of a daily time frame and 4 hours. Yes, so I'll look into the confirmation of my next TP2 at this range. So this will act as my next point of interest. Right, post this, what are the next steps that I'll be looking over here? Allocations of to the previous. So in this current scenario, this will be my point of interest 1. Retracement कितना लिया मार्केट में, जितना previous allocation point generate होते हुए दिखी है. In this scenario, this is my previous allocation point. This will act as my current. With the current movement allocation, whatever the movement I have got in yesterday's New York PM session, sorry, AM session, that will act as my current. Right, this is the scenario 1. Scenario
टू क्या देखेंगे हम यहाँ पे, जितना हमारा बिल्ड टू एक्शन जनरेट होते हुए दिखी है, that will act as my one. With this one, multiply it, 200% will be the rejection point, right? With 200% rejection point, what do we notice now? There is a small circumstantial change जो market में दिखने को मिली है. How do you look into the perspective of allocations? We'll come down to 15 minutes. 15 minutes में मार्केट क्या किया है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में इंड्यूसमेंट जनरेट करते हुए दिखी है, राइट? हाउ? Partner 1, partner 2, if we get a third partner, but very rare scenario, uske liye what are the next steps that we'll be following? This will act as my current. With the current movement, I will look for the next, right? This is the current plan of action. Retrace kitna hua market mein, jitna change of character mein build out dikhi thi. In this scenario, this will act as my revolution, which will get pretended to be the next retracement point, and then continuity. Post continuity, what will be the targets that we'll be looking at? The target allocations will be in perspective of each and every, sorry, गलत किया, एक सेकेंड गाइस, गलत किया, यस. सो रिट्रेसमेंट कितना लेगा मार्केट, जितना हमारा मूवमेंट एक्शन प्लान है उतने का ही रिट्रेसमेंट हमको यहाँ पे दिखने को मिली है. उसके साथ व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शंस दैट विल बी लुकिंग, द एंटायर मूवमेंट ऑफ अलोकेशंस फ्रॉम द बॉटम टिल द टॉप. With the top plan of actions, what are the next steps that we'll be following? The next steps we'll be following is in the allocation perspectives, right? So इस allocation के हिसाब से next trade of execution हमको दिखने को मिलेगी at the current state of actions, right? So this is the plan for at the current stage. जो भी doubt है, please do ask in the comment, else we'll move to the BTC. ओके, स्ट्रक्चर चेंज होना है तो मेरे को वॉल्यूम बढ़ते हुए 1 घंटे में दिखना है, उसके साथ विक प्रेशर दिखना चाहिए टुवर्ड सेलिंग साइड, एंड यहाँ पे S2B1 सेटअप दिखना चाहिए. देन ओनली आई विल लुक इनटू द नेक्स्ट, नॉट प्रायर टू दैट. ठीक है? एनी डाउट्स प्लीज टू आस्क. गुड मॉर्निंग अनिरुद्ध. फिफ्टीन मिनट्स अलोकेशन पॉइंट्स एक्सप्लेन सर. एक्सप्लेन ना. अगर रिवर्सल देखना है मेरे को, यहाँ पे एक सेटअप चाहिए. कौन सा सेटअप? विक क्रिएशन, बिल्डअप, थर्ड कैंडल एग्जीक्यूशन, या एक कैंडल क्लोजर, इनसाइड कैंडल, विद द इनसाइड कैंडल 2 कैंडल क्लोजर्स एंड देन ब्रेक. ये दो सेटअप जब तक नहीं मिलेगा, वी विल नॉट बी लुकिंग टुवर्ड्स द शॉर्ट, विल बी इन द लॉन्ग ओनली, right? At the current state of actions also, the market will first hit the target of 31.54, then the next target which is at 31.92. So that will be the plan of actions for today. ठीक है? शॉर्ट तभी देखेंगे जब हमको फर्स्ट 1 आवर एक्शन प्लान में स्पाइक बिल्डअप दिखने को मिलेगी, उसके साथ विक प्रेशर्स दिखने को मिलेगा, राइट? देन ओनली द नेक्स्ट प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन विल बी टेकन अंडर द सर्कमस्टांसेस, नॉट प्रायर टू दैट. ठीक है? रंजित.
So coming to BTC, what is BTC trying to do at the current state of actions? Following a beautiful rule, price action, starting with daily time frame allocation from the previous. How do you look into the circumstances of allocations in BTC? BTC में majorly first thing POI range को mark out करो because हमारे पास at the current state the major liquidity allocation is POI range, right? POI range allocation होने के बाद post inducement range mark out. Post inducement range mark out. What do we notice over here? Market tend to take a rejection from the same perspective. Yo, सर खेलना बंद करो. मैं क्या करूं? मैं खेल नहीं रहा हूं. तो रुको ना. गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग. ये लग ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? लग गया. ग्रेट. ओके. सो दिस एक्ट एज आर बाइंग प्रेस्पेक्शंस. यहाँ से बाइंग अलोकेशन दिखने को मिली थी. इस बाइंग अलोकेशन के साथ व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट विल बी लुकिंग? वी हैड एन इंटरनल लिक्विडिटी पॉइंट ओवर हियर. With the internal liquidity point, the market tend to take the rejection, right? With this rejections, what are the next steps that I'll be looking in perpetuals? The perpetuals movement will be taken under the consideration of the previous demand. With the previous demand, the continuity post S2B1 setup, market tend to give a break, but the body closure were inside the zone. With the body closure, what do we notice? This was one of our mathematical numbers, so we'll mark out this number range. So जैसे ही range of action को mark किया, what are the next steps that I'll be following? This will be my supply. With the supply, the market tend to take the rejection as per the previous supply, got converted into the current. With the current movement action plan, the market tend to give the boost, right? Till where did the market give the move? Till exactly the point of interest of our 100% range of actions. With 100% range of actions, what did the market tend to do at the current state? The market tend to take the rejection, right? Rejection 1 will be taken under the consideration of the previous. With the previous allocation, point of action 1, with the point of action 2, continuity. Market कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है at the current state? 150% से, right? जैसे ही 150% allocation होता है, what are the next steps we'll do in BTC? Come down to 4 hours. What is 4 hours indicating? 4 hours is indicating a move which has been in circumstances of the structure which has been following with the selling pressure के साथ currently market एक structure build में है, right? In this point of action ये हमारा previous demand है. retrace कितना हुआ था market? जितना हमारा previous action plan है उतने का ही retracement market ने दिखाया था. उस retracement के साथ 150% rejection के साथ continuity, right? So in this scenario, what are the steps that I'll be looking? Multiplying it with multiplying 150% rejection with 150% rejection, continuity of the previous demand, right? जैसे continuity of the previous demand यहाँ पे दिखने को मिला था, step 1 step 2 breakthrough में मिली थी. 150% rejection again taken under the consideration. 150% rejection के साथ market tend to give a break. So in this scenario, this will act as my current. With the current retracement point, again the market tend to take the rejection from 150%, right? Once the market tend to take the rejection from 150%, what are the next steps that I'll be looking at the current stage? What is my previous demand allocation? This one. What is the retracement allocation? This one. So in this scenario, market ने retrace कितना किया? 0.1, 0.2. Market tend to reject from 200%. उसके बाद कंटिन्यूटी में मूवमेंट कितना दिखने को मिला था? जितना हमारा प्रीवियस अलोकेशन पॉइंट है उतने का मूवमेंट अलोकेशन दिखने को मिली थी. एंड एट द करंट स्टेज मार्केट क्या कर रही है? मार्केट इज इन द बिल्ड.
Build of actions. What are the first steps that you will be following? The first step you will be following is the previous allocation point at the current stage, जो कि हमको यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, right? This will act as my current movement plan. Market यहाँ पे break of structure create करते हुए गई है, तो 150% will be my next, right, at the current state of actions. So इस point of interest में what are the mathematical numbers आप लोग follow करके चलोगे? The mathematical numbers that you will follow is the swing high will be this, the low will act as this, and the retracement will be this, right? At the scenario, what are the numbers that we'll be following at the current stage? The swing high is of 87,736.26 minus swing low, which is 84. एक second ना. Yes. 84,802.69. What is the formulative number? 2933.57. With that, what is the retracement point that I'm having at the current stage? 85,605.98. Direction is bearish, minus 2933.57 into 1.618. What is the target one that I'll be looking at the current stages? The target one that I'll be looking at the current stage is of 80,859. Right? Let's mark and check where is 80,859. Is it exactly as the precisions of the numbers what we have marked yesterday? The same number point. Right? With this point of actions, what are the next steps that we'll be following? The next step we'll be looking under the consideration of 1 hour. In the 1 hour, what are the major steps that market will tend to do? Market has followed a rule of action. Yes, definitely the market has followed a rule of action. Is the thing correct what we are doing at the current state? No, we are not doing it in the current state because 4 hours में हमने markout लिया ही नहीं था, right? Which is the markout that we'll be taking under the consideration of the movement at the current place of actions. This will act as my swing low. Short का तो देख लिया, long का भी देख लो ना. Swing high, retracement point, right? So with this plan of actions, what is the numbers that we'll get at the current state? The swing high is at 82,227.44 minus 76,642.15. Formulative number is 5585.29. What is the retracement value that I am having? 79060.61. Direction is bullish, plus 5585.29 into 1.618. What is the current target that I'll be looking at the state? The current target of golden ratio is 88097.60. Target hit hua hai? Wonderful. So what is the next step that I'll be looking at the current state of actions? The next plan of action is intermediate ratio, which is 90231.19. So this will be my next level of actions, which I'll be taking under the consideration of a bullish movement, right? Post the bullish movement action plan is done. What are the next steps that I'll be looking? Now I will come down to 1 hour, right? In 1 hour, what are the major criterias that you will be following through? The major criterias that you'll be following through is allocation of the supplies. The supply plan of action one will be taken under the consideration of this. Is it right or wrong? बताओ आप लोग, ये allocation सही है या गलत? Good morning, Imran. Good morning, Venkat. Wrong. Take only body because there is no break. Beautiful.
right? So what is the plan of actions that I'll be taking under the consideration? I'll be taking under the consideration of till the body only. With the body execution, what are the next steps that I'll be allocating? The allocations will be taken under the considerations of the first. With the first point of interest, this is the plan of action. No, it's a not again. So this is the plan of action, because at the first plan of action we didn't take the wick, so this wick will also not be under the consideration, right? With the same circumstances, what are the next plans that will be taking under the rule of action? The rule of action will be taken under the consideration of the retracement of the previous, which will act at the current state will be this multiplied 200% rejection. With 200% rejections, what are the next steps that market has tend to do? The market has given a break. With the break, the continuity, right? So this is the plan of action which was under the circumstances. With this, do we have a rejection? Yes, we do have a rejection. With the rejection, what setup did the market created and started moving up? The market created a inside S2 B2 setup, and इसी point of action के साथ market ऊपर के लिए build हुई थी. But each and every point of action there was a selling pressure, right? So what did market tend to do? Definitely there is a movement of 900 points, no doubt, but ज्यादा मूवमेंट नीचे की तरफ मिलेगा, क्योंकि मेजर एक्शन प्लान अभी तक लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ है रिटेलर्स का. जब तक लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती है, नो प्लान ऑफ एक्शंस विल बी टेकन अंडर द कंसिडरेशंस. ओके, सो पोस्ट दिस, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट आई विल बी फॉलोइंग? अगर मार्केट ऊपर के लिए कंटिन्यू करना है, ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है. ये रिजेक्शन का रेंज में से S2B1 सेटअप क्रिएट करने दो, उसके साथ हम लॉन्ग के लिए देखेंगे, उससे पहले नहीं. Okay, coming down to 15 minutes, what are the major steps that I'll be looking at the current state of actions? Allocations, right? In the allocation perspectives, what are the major things that I'll be identifying over here? Circulating supply 1. With the circulating supply, where is the second circulating supply that I have got? The second circulating supply of yesterday was in the zone of this movement plan, right? सो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो हिट डाउन हो चुकी है, बट मेजरली अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. उसका प्लान ऑफ एक्शन आके 84,250 तक आएगी, राइट? अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ब्रेक थ्रू देता है, दिस इज द प्लान व्हाट यू विल बी फॉलोइंग, राइट? सो विद दिस प्लान ऑफ एक्शंस एट द करंट स्टेट, सर्कुलेटिंग सप्लाई स्पेंडिंग है, न्यूयॉर्क सेशन में दिखने को मिलेगा हंट. तो उसके साथ अभी करंट मूवमेंट अलोकेट करेंगे. सो फॉलोइंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ करंट सप्लाई with the current supply plan, multiply the version, allocation, rejection, right? अगर मैं डबल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में 200% रिजेक्शन देखता हूँ, वो भी है हमारे पास एट द करंट स्टेट, राइट? रिट्रेसमेंट कितना लिया था मार्केट ने? जितना हमारा प्रीवियस लास्ट रेंज ऑफ अलोकेशन है वो वाला लेंगे, या वी विल टेक द रिट्रेसमेंट ऑफ द लास्ट. In this scenario, this will act as my current retracement point, जो कि हमें यहाँ पे build out में दिखी है, and जो movement action plan allocation जो पूरा allocate होगा इस point of action से, that will be taken under the consideration for the movement. इस movement के साथ post allocation, what do we notice? Do we have a break? Yes, we do have a break. With the break and continuity, reallocation structure. राइट? सो अगर ब्रेक थ्रू नहीं देता है तब तक के लिए नो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शंस विल बी टेकन अंडर द कंसिडरेशंस. सिंपल रूल, अगर ये रेंज के अंदर है, मार्केट विल कंटिन्यू द रैली. अगर ब्रेक होता है, द मार्केट विल टेंड टू ब्रेक एंड कंटिन्यू टिल द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ 80,788. Any doubts? BTC 1 hour, can you please explain it again? Why the only body was considered, which break was not there? Okay, sure, definitely. So in 1 hour circumstances, अगर notice कर रहे हो, what are the major criterias that you have to look, right? Market tend to create a movement over here. Yes, movement build हुआ. क्या हमारे पास त्रिशूल है यहाँ पे, which is this point of action?
No, we don't have it. With this circumstances, what are the next steps we are looking over here? We have a Trishul over here. Yes, we do have a Trishul over here, right? For the short movement. With the short movement allocations, what are the next steps that I will be looking at the identifications? The identification is, do we have a break, right? What is a break in the structure means when you are allocating a supply, right? ये जो movement action plan है ना, ये पूरा लूंगा मैं, तो what will be the major analysis that I have to go through, right? यहाँ पे मेरे को बॉडी स्ट्रक्चर पूरा चाहिए था, राइट? सो ये बॉडी स्ट्रक्चर जब पूरा क्रिएट नहीं हुआ, जहां पे लिक्विडिटी हंट हुआ है, तो इस सिनेरियोस में हम क्या करते हैं? वी ओनली कैलकुलेट द बॉडी पॉइंट ऑफ रेंज, राइट? एंड जो कंटिन्यूटी में मूवमेंट आएगा वो भी बॉडी रेंज में ही होगा। कब तक? जब तक देर इज नो प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक। मतलब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक विक क्रिएट हुआ है, यहाँ पे बॉडी बिल्ड हुई है, पोस्ट दैट नेक्स्ट कैंडल भी पूरा विक क्रिएट हुआ है, छोटा बॉडी क्रिएट हुई है। तो जब तक बॉडी क्लोजर हमें विक तक नहीं मिलता है, तब तक हम सिर्फ प्रीवियस बॉडी अलोकेशन ही देखेंगे, विक अलोकेशन के साथ नहीं। ओनली द बॉडी अलोकेशन विल बी टेकन अंडर द कंसिडरेशन। ओके नीलेश? सर मैथमेटिकल नंबर्स डाल रहा हूँ, डाल। Okay, we'll check and ask if any. No worries. इमरान एमटीएसएल फॉलो करो, लॉन्ग का ट्रेड्स का। क्या हो रहा है? Yes, two long trades running with MTSL. Next target is 3154, 3154। जो तुम्हारा 80 के साथ जो एग्जीक्यूशन चल रहा है ना, वो 80 के साथ का जो एग्जीक्यूशन चल रहा है, उसका MTSL पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आके 3122 पे होना चाहिए। एंड जो तुम्हारा कल के दिन का 3101 का ट्रेड जो चल रहा है, उसका MTSL परपेचुअल शुड बी एट 3132। ओके, सिस्टम ट्रेलिंग ऑफ द फर्स्ट ट्रेड 80 का आके आपका होगा 3113 पे। एंड सेकेंड ट्रेड जो कल के इवनिंग सेशन में जे लिए थे 3101 का, उसका TSL इन द सिस्टम विल बी एट 3127। ओके,
अगर यहाँ पे सेटअप बिल्ड होता है, यू कैन लुक फॉर अ शॉर्ट अगेन टिल द हैंड। सिर्फ सेटअप बिल्ड होता है तो, वरना नहीं। इमरान इज इन फुल फॉर्म फ्रॉम आईडी टू स्विंग ट्रेडर। ग्रेट। राइट। सर इंडियन सेशंस क्या है? क्या इंडियन सेशंस में क्या करोगे? लो, एग्जैक्ट लेवल से रिजेक्शन लेके जा रहा है, और क्या चाहिए? देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मैथमेटिकल रूल, रिजेक्शन लिया था, उसी रिजेक्शन के साथ कंटिन्यूटी में है। यहाँ पे इंडियन सेशंस में ऑप्शन स्विंग ट्रेडर्स हो तो करो, इंट्राडे में स्कैल्पिंग करना है तो नहीं। राइट, स्कैल्पिंग तभी करना जब देयर इज अ प्लान ऑफ एक्शन। यहाँ पे जितने भी रनिंग में बैठे उनको सब बाहर करेगा अभी, रुको। राइट, ये हमने फ्राइडे के दिन ही मार्कआउट करके रखा था, वही मूवमेंट का टारगेट आज गैप डाउन ओपन करके हिट करके कंटिन्यूटी में गई है। राइट, बिकॉज देर वॉज ए परपेचुअल मूवमेंट अलोकेशन ऑफ 15,000 crores, जो कि रिलीज हो गया ना डेटा। थर्टीन थाउजेंड का रिलीज हुआ है, ओके। राइट, जो कि हमने फ्राइडे के दिन ही बोला था, वो डेटा आके कल के दिन रिलीज हुआ है, वो भी पूरा नहीं रिलीज किया है, वो भी आधा रिलीज किया है। Right, so what are the next steps? Do the math again. How will you look into the circumstances of math? This will act as your swing high, sorry, this will act as your swing high, this will act as your swing low, this will act as your retracement point. Right, same scenario with Nifty, this will act as your swing high, this will act as your swing low, this will act as your retracement point. फॉलो करो, आपको पता चलेगा कहाँ से मूवमेंट एग्जैक्टली रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में गया है। रेसिपी बुक फॉलोइंग यू ओनली। यहाँ पे कुछ भी मत करो, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज फॉलो करो, जो कि है कितना पेशेंसफुली आप ट्रेड में बैठ सकते हो, या कितना पेशेंसफुली आप यहाँ पे वेट कर सकते हो ट्रेड्स के लिए। ये दो चीज आप इंडियन सेशंस में बिल्ड कर लो, आप जिस भी डायरेक्शन में बैठोगे पैसे बनेगा। हाँ, किसी भी डायरेक्शन इन द सेंस मैथमेटिकल डायरेक्शन। ओके।
Sir, yesterday you said a book. What is that? Which book? So, Friday morning session on wings of daily candles. Just one question. Yes, Imran, please do ask. In example, you took sometimes three, sometimes four or five. I'm confused about the selections. Coming to that, give me a moment. Right? In the scenario, how to select a wing. So, wing selections is not just by the candles, right? If you have taken a range from 1 to 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, right? In 8 candles, there will be wick on the top side for 5 candles, right? Example, I have taken this 1, 2, 3, 4, 5, right? But in the bottom side, you might be finding 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the candle collection is of 8, right? In this 8, in the buying side, you got a wick selections of 4, 5, right? But in the short side, you got a collection of 6. So you will be taking the consideration of the same range, right? So whichever side the pressure gets built on the long side, that will be taken under the consideration towards the next, not prior to that. Okay. The range of wings should be selected in a go. Just for an example, if in the daily time frame, if I select the wing, no, the range will always be in the allocation perspectives, right? वहाँ पे range होना चाहिए, POI range, right? Just for an example, in the perpetual moment of the current scenario, if I take a scenario of this box range, right? How many candles do we have in this scenario? With this scenario, how many buying wicks was taken under the consideration? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. In 13, how many candles does has a wick towards selling side? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right? But for buying pressure, how many wicks do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So definitely यहाँ पे buying pressure ज़्यादा है ना. So if you look for a reallocation perspectives onto the same, आपको वही allocation दिखने को मिलेगी on the continuity. Okay.
a small example दिखाने के लिए, राइट? ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ जरूरत नहीं है, एक प्योर रेंज होना चाहिए जहां पे आप बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर्स दोनों आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि ऑन ए मोमेंट गो, अगर मेरे को किस तरफ का मूवमेंट चाहिए करके अगर मैं इस कैंडल में देखने को बैठूंगा ना, आई वोंट बी एबल टू फाइंड इट। Yes, but definitely again in the swing, I can able to find it here, right? One, two, three, four, five candles, right? In the five candles, which is the major allocation? One, two, three, four, five. Five candles has selling pressure. One, two, three, four, five. Five has buying pressure, right? With this allocation, let's check what is the movements and mark out the range of action, right? So in this scenario, one, two, two, three, four, five, right? So five candles has a movement over here. With this, one, two, three, four, five. Let's do the mark. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Right? So in this consideration, which movement has the bigger version? The buying side. So hence the movement is continued in the buying side. Always remember one thing, the calculation perspectives are taken under two movement allocations. वहाँ पे selling का भी होना चाहिए, buying का भी होना चाहिए, right? Not in a go, not in single understanding. Clear? Sir, what is volume contraction? Volume contraction is looked under 15 minutes, right? जहाँ पे डायरेक्शन बिल्ड होता है ना, उसी डायरेक्शन का साथ मार्केट मूवमेंट अलोकेट करता है। अगर ये कैंडल ऊपर जा रहा है, वन, टू, थ्री, फोर, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिखेगा। वन, टू, थ्री, फोर। बट वो अभी काम नहीं करता है, बहुत रेयर करता है। Okay, Imran, is that clear? Yes, clear.
गाइस एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया है, 10 मिनट्स। आई विल बी बैक। 10 मिनट्स। बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, सब। कोई भी डाउट है कमेंट करते रहना, आके मैं सब क्लियर करूंगा।
Sorry guys, sorry. राम राम भरत, राम राम। कोई बोल नहीं रहा। सर इज आउट ऑन ए कॉल। आवाज नहीं आ रहा, क्या हुआ? कोई बात बता सकता है क्या? ओके। नहीं नहीं स्मिता मैम, वेट करो। 50,400 नेक्स्ट टारगेट। लेट्स डू द रीमैथ। Starting with the reallocations towards the perspectives. This will act as my swing high. This will act as my swing low. This will act as my retracement. So in this case, 2388, 23,866.35 minus 23,603.25. What is the formulative number that I have got? 263.1. Right, 263.1. What is the retracement value that I'm having at the current stage? 23720.05. Okay, minus, because the direction is bearish, 263.1 into 1.618. My current target allocation is at the perspective of 24,246. Sorry. 23720.05. Direction is bearish, minus 263.1 into 1.618. My current target at the scenario is of 23,294.35. राइट, ये मेरा टारगेट हिट हो चुका है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इंटरमीडिएट रेशियो 23720.05 minus 263.1 into 2, which is my intermediate ratio. Intermediate ratio at the current stage is 22930.75. Right? So this is my next plan of actions, which I'll be looking under the consideration. Okay? 2293. नहीं गलत हुआ। This number is different. Huh? 22,23193.85. Yo. This is the target what I am having at the current range of actions for intermediate ratio, and this is the target what I am having for the current state of actions of golden ratio. Right? अगर इस action plan के साथ break होता है, then we will look for an add-on again, everyone. Okay? Banknifty ka targets at the current state of actions is at the perspectives of 50,400. Why? Could explain you in a minute. Understand the scenario structures. This will act as the swing high. This will act as the swing low. This will act as the this will act as my retracement point. With the plan of actions, what are the swing highs that I'm getting at the current stage? The swing high is of 52,049.80 minus
51432.05. What is the formulative number? 617.75. What is the retracement point that I am having? 51881.30 minus 617.75 into 1.618. The current target that is currently moving at the scenario is 50,881.78, right? जो कि हमारा target hit हो चुका है. With this, what is the second target that I'll be looking for? The second target I'll be looking is 0.645.8, which will act as my intermediate ratio. राइट, इंटरमीडिएट रेशियो टारगेट कंप्लीशन होने के बाद ही नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन, जो कि लिक्विडिटी ग्रैब के साथ मूवमेंट अलोकेशन यहाँ पे होगा टिल 50,400. ओके, so these are the plan of actions that I'll be looking under the current scenarios. Allocation perspectives कैसे देखने वाले हैं at the current stage? This will act as my scenario 1, multiply the version, reallocation, perspective 1, reallocation, rejection. Right, market ने rejection कहाँ से लिया? At the first 15-minute candle, same zone of action. Right, with the same zone of action, continuity, previous जो demand range generate हुई है, उस demand range को mark out करेंगे, उसके साथ break through. First target is 50%, second target is 100%. 50% का target जो हमारा intermediate ratio है, वो hit होके continuity में गया है. उसके साथ let's come down to Nifty and check the allocations for the same. Right, same movement action plan, no changes. This will act as my previous demand. With the previous demand, market tend to continue because gap down open हुआ था. उसके लिए we are not taking the supply calculation at the current state because that was just a retailer's hunt which has taken under the propositions. Right, with this point of actions, my 200% at the current ranges, my intermediate ratio 23202.6. ओके, अगर उतना ही कॉन्फिडेंस से अलोकेशन देखना है, जो आपका प्रीवियस सप्लाई ये वाला एक्शन पॉइंट एंड ये वाला एक्शन पॉइंट देख सकते हो, कहाँ तक मार्केट मूवमेंट जनरेट हुआ था. पॉइंट ऑफ एक्शन 1, मल्टीप्लाई इट, अलोकेट होता है नहीं, राइट. सो सेकेंड पॉइंट ऑफ एक्शन क्या था? ये वाला. डू वी हैव एन अलोकेशन? यस, 150%. बट दिस इज नॉट द सिनेरियो ऑफ लुकिंग, क्योंकि ये गैप डाउन ओपन करके मार्केट स्ट्रक्चर चेंज किया था. So this is just a guess allocation what we have put, but majorly no setups you will be looking at the current stage. Right, setup यहाँ पे execution का कहाँ पे था? 1, 2, third execution in this candle perspective only, no other execution points. Right, but swing trading के लिए कहाँ से execution थी? इस point of action से. 1, action point number 2. Right, so this was exactly mentioned in the Sunday's video that market is at the current state bearish because selling pressure. Buying pressure यहाँ पे कहीं पे दिखा आपको? नहीं. Right, each and every perspective there is only selling pressures and the movement continuation. वही market carry forward किया है in the continuity till the targets. ये definitely बहुत बड़ा break आने वाला है on to the retracement again from intermediate ratios of the both. Okay. इमरान, आपका जो कल का ट्रेड है ना 3101, राइट, सिस्टम ट्रेलिंग यहाँ पे होगा 2141 3141 पे. ओके, ये वाला जो नीचे वाला जो ट्रेड है 3080 का, 3080 का सिस्टम ट्रेलिंग आपका होगा 3133 पे.
right? Follow through the same price action point. यहाँ पे एक अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिलने वाला है हमें अभी. Can we consider this current movement to be in a circulating supply? This movement, no calculations and a circulating supply. That is a proper break and continue. अगर दिखाना है यहाँ पे हर एक 3 कैंडल या 4 कैंडल 2 कैंडल के साथ आपको रिजेक्शन है नहीं है. You can consider this point of action as circulating supply. ठीक है, जो हंट होना पेंडिंग है. Sir, is it BTC S2B1 setup? S2B1 setup के लिए थर्ड कैंडल क्लोजर चाहिए. This is just the second candle. यहाँ पे continuity में आना चाहिए drop. This candle will be taken under the consideration for S2B1 setup. Okay. Not prior to that. किसी को भी कोई डाउट है, please do ask. वर्षा एक लीगल डॉक्यूमेंट भेजा है, प्लीज फॉलो थ्रू दैट एंड गेट द लीगल टीम वर्किंग ऑन इट.
लंदन सेशन स्टार्ट हो चुकी है. सर एनी ट्रेड्स इन टुडे सेशन? यस, गोल्ड में चल रहा है. फर्स्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे था, सेकंड एग्जीक्यूशन यहाँ पे थी. सॉरी, ऑपोजिट बोला. फर्स्ट एंड सेकंड. ये एड ऑन क्वांटिटी पॉइंट था. जोन ऑफ एक्शन में सबको हंट कर रही है, इतना अच्छे तरीके से हंट कर रही है ना. रिटेलर्स यहाँ पे घूम घूम के दे रहे हैं सर. राइट. डाल लो बॉक्स. व्हाट जोन इज दिस? सेकंड प्रेशर इंडिकेशन है बेरिश साइड का. What is the risk to reward to be followed in this kind of zones? There is no risk to reward to be followed in this kind of zones. Wait patiently till the next candle gets closed. Sir, what is a bad debt? Because I was hearing it in my family. Bad debt is nothing but a scenario where it creates a liability for you, right? Just in case, samajhna, you have got a car, right? That is a depreciating asset, right? You had invested in a personal loan. You have got a personal loan, right? The personal loan is a depreciating asset. So this both comes under bad debt. Just for an example, you opened a pub, right? So pub is also a liability for you. When it's a liability, it comes under a bad debt, right? So example in perspectives of that, अगर तुम्हारे घर में 3 लोग हैं और 3 कार है, that is not a good investment at all, right? So that are the followments that you have to keep in mind, and being through in the directions of creating assets to generate revenue, not buy assets to depreciate the value. Okay, so remember this. Okay, एक घर खरीदा था, but उससे कुछ रेवेन्यू नहीं आ रहा है. So dad was saying, okay Ambika, so you can convert that property into RRR. Once you convert the property to RRR, you will get a revenue generation from it.
of yearly of 7.8%. Give the idea. Your dad is not here, or else मैं ही खुद बोल देता हूँ. Okay? शाम पे आएंगे ना, मैं शाम पे बता देता हूँ, कोई बात नहीं. सर शॉर्ट के ट्रेड में हो क्या? यहाँ से. What is RRR? Recurring revenue refurbishment, right? So wherever you have a depreciating movements, this will help you out to regenerate the wealth through your depreciating asset. Example, everyone might have a car, right? अभी अगर आप उसे बेचने जाओगे, right? क्या होगा मार्केट में? मार्केट में उसका वैल्यू आधा दाम पे मिलेगा, right? So this is not a good movement. So what we'll be doing over here, we will use a RRR method, right? मैं सेम कार को 300 रुपए में एक ड्राइवर को हायर करूंगा डेली बेसिस में, एंड उसको रिफर्बिशमेंट में डालूंगा ओला या उबर के थ्रू, राइट, फॉर डेली ट्रिपिंग. When there is a daily tripping happening, so the car value whatever is been in the depreciating value, in 6 months that will be in a appreciating value, right? Same way, anything can be put into a RRR mode. Anything in the world can be put into a RRR mode. अगर आपके पास BMW है, राइट, एंड उसको सेल करना है, सेल मत करो, उसको RRR मोड में डालो. जैसे ही RRR मोड में डालोगे, you will get revenue generated on a monthly basis of at least 60,000 through Ola, and Uber Black के through 75,000. Beautiful, Imran. Even some properties don't get into the play with a proper good returns, so play RRR mode. ये कोई नहीं बताएगा आप लोगों को. गूगल भी कर लो, नहीं मिलेगा. गुड मॉर्निंग पटेल. एंड रिस्क टू रिवॉर्ड दिखाता हूँ कैसे होता है. प्रिस्क्रिप्शंस एग्जीक्यूशन पॉइंट, लंदन सेशन का 4 पॉइंट चाहिए, 4 पॉइंट के रेंज में ही है अभी भी. सब लोग सोच रहे होंगे क्या हुआ यहाँ पे. रिटेलर्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से बोल रहा हूँ. ओके इमरान, होप यू गॉट व्हाट इज RRR. ब्यूटीफुल यार.
I got that 120 pips running. Great. You're in short, right? You entered at 31.47. Market is running with 130. अभी तो एक्सप्लेन किया. कौन सा आरआरआर की बात कर रहे हो? ट्रेडिंग की आरआरआर की बात कर रहे हो या बैड डेप्थ की आरआरआर के बारे में बात कर रहे हो? भरत. बैक टेस्ट. बैक टेस्ट क्या है? ओके, बैड डेप्थ मतलब, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये बैड डेप्थ का मीनिंग क्या होता है? आपने एक लोन उठाया, राइट? आपके खुद के यूज के लिए यूज किया है, राइट? दैट इज अ बैड डेप्थ. ना आपने बिजनेस ग्रो के लिए लिया, आपके ट्रिप के लिए जाने के लिए ये लोन लिया, दैट कम्स अंडर बैड डेप्थ, राइट? बाद में आपने एक पब ओपन किया, राइट? उसमें लायबिलिटीज ज्यादा है, अगर आपको मैनेज करना नहीं आता है, दैट कम्स अंडर बैड डेप्थ, राइट? सो उसके बाद आपने एक कार खरीदी, कार खरीदने के बाद यू डोंट नो हाउ इट वर्क्स, व्हेन इट वर्क्स, क्या अप्रिशिएट हो रहा है यहाँ पे? नहीं, बैड डेप्थ. यस, car will come under good depth when the asset is giving you that cars. अगर asset के साथ मूवमेंट आता है, उसमें जो प्रॉफिट कमा रहे हो, राइट, उसके साथ आप कार खरीदते हो, देन यस, यू वोंट फील द पेन बिकॉज इट्स फ्रॉम द प्रॉफिट्स. अगर आप कमा रहे हो सैलरी में, आप डाउन पेमेंट करके 10 साल का ईएमआई भरने लगोगे कार के लिए, राइट? दैट इज अ बैड डेप्थ इन्वेस्टमेंट ऑन टू अ कार. क्योंकि 10 साल आप भरोगे, 4 साल के बाद तो उसका अप्रिशिएटिंग वैल्यू 50% नेगेटिव में चला जाएगा ना, राइट? एनीथिंग विच कम्स अंडर ए ईएमआई इज बैड टू यू. ओके, ईएमआई इज गुड कब होता है? जस्ट फॉर एन एग्जांपल, you bought a property to rent, you got a property to refurbish, you got a property to give it to Airbnb, that and all are good debts, right? That loan is giving you the money to you, so you can clear the loan from that, right? Post that, whatever returns get into the play can be played in a different scenarios. Okay, so that is the things of looking into the movement action plan. I closed my one long with 400 pips. क्यों भाई साहब? इमरान, मैंने क्लियर कट बोला था, तुम्हारा जो 3101 था उसको 3141 में क्लोज करने के लिए, करेक्ट? So always remember, bad debts and good debts plays a very important role. बैड डेब्ट्स के थ्रू अगर आप लोगों को लाइफ आगे लेके चलना है, तो हमेशा कर्जे में रहोगे, ईएमआईज भरते रहोगे, राइट? लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. स्टार्टिंग विथ होम लोन, सेकेंड वन कार लोन, थर्ड वन कॉलेज एजुकेशन लोन, फोर्थ वन किड्स इंश्योरेंस, किड्स ग्रोथ प्लान. दिस एंड ऑल आर बैड डेब्ट्स. आप लोगों को कोई नहीं बताएगा. सेकेंड वाला भी क्लोज कर लो इमरान.
ओके, कोई नहीं बताएगा। अगर आप बोल रहे हो नहीं मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं ईएमआई भर के खुश रहूंगा, जिंदगी भर ईएमआई भरते रहोगे। उससे अच्छा है 3 साल कुछ मत खरीदो, 3 साल मेहनत कर लो, पैसे कमाओ, उसके बाद गुड डेप्स में आओ। जैसे गुड डेप्स में आओगे तब जाके प्लान ऑफ एक्शन में आना। राइट, there is a way of looking out into opex cost and capex cost into the life stability. गुड जॉब इमरान, एमटीएसएल फॉलो करो, सर्कुलेटिंग सप्लाई तक का टारगेट है। ओके, एमटीएसएल माइंड ट्रेलिंग होता है। राइट, एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे था, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में हमारा मेजर सिस्टम ट्रेलिंग कहाँ पे था? सिस्टम ट्रेलिंग वाज एट सिस्टम एसएल, राइट, was at London session 4 points. This is the 4 points SL range, right? With the 4 point SL range, market ने break दिया। यहाँ पे first आता है MTSL। कहाँ पे MTSL play करता है at the current state? MTSL will play at the state of 4 points plus 60. In this scenario, मेरा point of action MTSL 60 points में आते ही मेरा mind में trailing शुरू होता है। राइट, तब जाके ये सिस्टम ट्रेलिंग आके सीटीसी प्लस 10 पिप्स जो कि 1 पॉइंट में आती है। राइट, जब जब मूवमेंट मेरे को 10 10 पॉइंट्स बढ़ता जाएगा, मैं यहाँ पे ट्रेल करते जाऊंगा इन द माइंड कि लाइक ओके दिस इज द पर्सपेक्टिव, यहाँ तक मूवमेंट आता है मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, क्लोजिंग देने के बाद कंटिन्यूटी में आती है, तब जाके मैं एग्जिट करूंगा। राइट, सो करंट सिनेरियो में ये मूवमेंट आके 260 पॉइंट्स की मूवमेंट में चल रही है। राइट, इन दिस सिनेरियो मेरा एमटीएसएल यहाँ पे होगा, इस कैंडल के ऊपर मेरा सिस्टम ट्रेलिंग 150 पिप्स पे होगा। दैट इज एमटीएसएल एंड टीएसएल। ओके, एंड कोई भी मत बोलो कि यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं दिया था। भाई मैं कॉल पे जाने से पहले आप लोगों को यहाँ पे इंडिकेशन डाल के गया था। रिस्क टू रिवॉर्ड रेंज में है, प्राइस एक्शन अलोकेशन में है, रिवाइंडिंग मूवमेंट प्लान ऑफ बिल्ड पे है। एवरीथिंग इज टेकन अंडर द कंसिडरेशन। यस डिड इट, टोटल 920 पॉइंट्स, ब्यूटीफुल इमरान। गोल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड है आपका ये? हाँ इमरान। Yes, I saw your indication, but I took order on second rejection candle. Got it. आपका एग्जीक्यूशन यहाँ पे है। सॉरी, यहाँ पे। Yes, so far big one. Keep it up, my boy.
बीटीसी में क्या चल रहा है? बीटीसी में भी सर्कुलेटिंग सप्लाई है हमारे पास. The entire zone of action. But I didn't look for the profit in those orders. I never asked you about the profits. Till date मैंने पूछा है कितना profit किया है? नहीं ना. Following the system, following the pip range. That is what I want. I have never asked you what is your capital, what is your execution point, nothing. Right? So that is how you look into the trades. You have done a good job in that. Keep it up. Okay? Till the circulating supply is not taken, Bharat, आप opposite direction का trade में मत देखना. Is to B1 generating in BTC. Is to B1 generating in BTC. Bank Nifty TP2 hit हो चुकी है अरुंधति मैम. Beautiful break and continuity. 1, plan of action 2, retracement plan number 3. इस ब्रेक होना है. ब्रेक नहीं होगा तो मजा नहीं है यार. होगा होगा. Is exactly when we don't look the profits, then only we'll be able to hold trades and follow system. Definitely, yeah, definitely. उसके लिए तो मैं पूछता हूँ ना आप लोगों को, पिप्स में बताओ चलेगा. Simple rules, simple calculations, simple way of looking into the markets, right? ना हम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं. हमको पता है कहाँ तक मार्केट आएगा. Execute in that direction. Allocate it. Simple and easy. राइट. अगर प्रॉफिट देख के बैठे रहोगे उस चक्कर में, डेफिनेटली यू विल गिव बैक टू द मार्केट्स. जल्दी क्लोज करने का मन करेगा. अगर समर एट द करंट स्टेट आप S2B1 सेटअप के साथ बनने की कोशिश कर रहे हो तो वेट कर लो. आपका एसएल रेंज 600 पॉइंट्स का है. बट दिस टाइम प्रॉफिट भी अच्छा हुआ, जस्ट से. मेरे को उससे मतलब ही नहीं है. प्रॉफिट कर रहे हो, गुड फॉर यू. प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, इवन देन इट्स गुड फॉर यू बिकॉज यू आर लर्निंग. नो नो, आई एम नॉट इन ट्रेडिंग. ओके, ग्रेट समर. राइट. नीलेश, कोई डाउट है? Hugh, any doubts, man? It's been 1 month, you haven't asked single doubt.
I'm just training my eyes on setup finding. Okay. यू डेली प्रॉफिट हो रहा है तो कहाँ से आएगा डाउट. मैंने कुछ नहीं किया, सब आप लोगों का काम है. गुड जॉब. इतना आसान है क्या ट्रेडिंग? ये मेरे को 4 साल पहले क्यों नहीं पता चला? 4 साल पहले आप लोग सिर्फ दूसरों का ट्रेड्स कॉपी कर रहे थे. सीख नहीं रहे थे. Trade in profits is always tempting. Better not to look at it. You can look at it if you want to control on your eyes, if you want to control on your greed, look into the profit sometimes. Okay? वो जब वो दिखता है ना, 500K रनिंग, 600K रनिंग, राइट, इमीडिएटली 500K से 450 300 तक आता है, फिर से 500K तक आती है. दैट फीलिंग इज गुड, राइट? वो जो पंप होता है ना, हार्ट बीट ड्रॉप के हिसाब से, that will get into the control once you understand the procedures of mind controlling. माइंड कंट्रोल कब होती है? जब आपका आंख वो प्रॉफिट या लॉस को देख के रिएक्ट नहीं कर रहा है, राइट? हाउ इज योर माइंड गेटिंग द सिग्नल? थ्रू द आईज ओनली ना. Eyes is saying, okay, my god, this is in red at the current stage, let me go and close. The eyes gave you the indication to close it. When it's in green, the mind will give you a trigger of closing it early. The only thing is when you can sit peacefully and watch the draw. No fear. First thing, following the proper risk to reward ratios. Second thing. Third thing is one and only thing that you will be looking at the current state is emotional less trading. जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. Okay. What is the next plan of action? Swing high will be the same. Retracement point will get changed at the current plan of actions of this. And your swing low will act as this. Do the math. आप लोगों को ये लगता होगा ये बंदा रोज एक ही चीज बोलता है. भाई मार्केट में एक ही चीज चाहिए. वो पहले करो, वो पहले सीखो, वो पहले बिल्ड करो, उसके बाद दूसरे चीजों में आना.
अगर आप इंडिकेटर्स फॉलो कर रहे हो, मूविंग एवरेजेस फॉलो कर रहे हो, आरएसआई फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। थोड़े दिन में ये जो ड्राइंग्स कर रहे हैं ना सप्लाई एंड डिमांड का, वो भी नहीं रहेगा। तब क्या करोगे? तब लोग बोलेंगे मैं तो यहाँ से गया। तू चुप रहेगा थोड़ा देर, हर्षद? Imran, what are you using? You're using a prop firm or you're trading with your real money? I think prop firm, right? Prop firm. Okay. वो prop firm वाले भी पागल हो गए होंगे। सर एसएल कब देना है? क्या सवाले पूछते हो यार आप लोग। जिस दिन तुम्हारा माइंडसेट साइकोलॉजी खराब होगा उस दिन देना एसएल। तब तक नो एसएल। एंड वो सिनेरियो जब तक तुम टीटीएस में हो तब तक तो नहीं है। यस, माइट बी दे गॉन क्रेजी। 45 days of live stream, zero SLs hit. थैंक यू सर। मैंने कुछ नहीं किया है, आप लोगों का सब काम किया जा रहा है। आप लोगों का फल आप लोगों को ही मिला है।
What is prop firm? How that account works? Funded account with some fees. सर TTS मतलब दी ट्रेडिंग सीक्रेट, हमारा चैनल का नाम. Nilesh, Google it. You will get hundreds of it, but proper research is mandatory. नीलेश, एक ही चीज बताऊंगा. If you are able to fund your account by $300 and start trading, you don't need a prop firm. Okay? उधर आप $1000 दे के एक 100K के अकाउंट खरीदोगे, डेमो स्टेज पार करना है, right? With this stages, yes, definitely you will get good value. अगर डेमो अकाउंट पास हो गया, then you will get a real account. With the real account, you have lot of restrictions. अगर 2500 या $5000 एक दिन में उड़ाते हो, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा. Okay? So yes, if you have a proper mindset of only executions with low leverage trading, तभी जाके एक अच्छा खासा $1000 का अकाउंट खरीदना, वरना नहीं. So trade here with your real money so that you will have the knowledge and be able to capture it. Okay? Patience fully grow होगा. यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैनेज होगा एंड किसी भी फ्रीजिंग का टेंशन नहीं होगा. इंडिया तर ज्यादातर लोगों का फ्रीज होता है अकाउंट, सो बी वेरी केयरफुल. ओके नीलेश. Yeah, prop firm is an account where they give you funds to trade, right? But understand one thing, prop firm is earning the money. Why? Because 95% of the people who are buying a funded account is blowing their accounts in the demo stage itself. Right? When they are blowing it in the demo stage, firms are earning the money. Right? Post that, what is the next steps that you will be looking? जिस दिन अगर लोग सब लोग प्रॉप फर्म से प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे, एक चीज बताओ मेरे को, क्या प्रॉप फर्म आप लोगों को कहाँ से पैसा देगा?
उसका मेन अर्निंग सोर्स ही है डेमो अकाउंट तक लोग आने दो, पैसा खर्च करने दो, उसके बाद डेमो अकाउंट में ही फेल हो जाने दो। उसके वजह से द prop firms are earning really good. It's a business. सर इज इट ट्रू एक्सनेस में विड्रॉल प्रॉब्लम है? नहीं पटेल। हाँ, अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, मल्टीपल क्रिप्टो वॉलेट्स सब यूज करोगे, then yes, definitely there will be a problem in withdrawal, right? एक ही चीज याद रखना सब लोग जो भी एक्सनेस से कर रहे हो, फर्स्ट do it with driving license. Don't give PAN या आधार। First step, no PAN, no आधार। Verification will be done through driving license, which is not linked with your PAN. Second step, one account of crypto wallet, one account for withdrawal. No multiple action plans will be taken under the consideration. ठीक है? Post this, whatever the withdrawal deposit will happen with the same wallet, with the same bank account. Okay? भाई 7 दिन बोला था, close the stream, go, come after 7 days, Manan. Seven days, complete 7 days, Manan. Without 7 days, no looking into the next circumstances. Already आधार से registration करवा रखा है. It's been 2 years. Deactivate that account. Use deal. Thank you, Manan. Come after 7 days. जितने भी लोग आधार कार्ड से किए हो, please deactivate that account as soon as possible, because that is linked with your banks. That is linked with the government. भाई अगर ये कैंडल को देखने के बाद भरत, if you're saying it's retracing, you have taken it wrong. Okay?
Yep, Prashant, I also had account, didn't know why I opened it, but it says PAN registration. Okay, sir, will deactivate. Okay, deactivate it and use it to DL and open it again. But what about the funds in the funds in that account? Can we transfer it to the new account as withdrawal may block the account, right? Why will they block your account? Nilesh, take out the withdrawal, right? Online withdrawal, you will get it in 20 minutes, max to max. If you have done the registration to us, 20 minutes के अंदर पैसा account में आ जाएगा, right? उसके बाद deactivate करना, उसके बाद DL use करना फिर से, ठीक है? I still don't understand the channel is filled with knowledge, but yet there is no growth. I still don't understand the channel is filled with knowledge, but yet there is no growth. कोई बात नहीं. S2 B1 बन रहा है sir. Sorry. Thank you, Bharat. Till the time confirmation नहीं देता है market, don't jump into the conclusions, please. A small request. Okay, we'll try. At recipe book, हीरे की परख जोहिर को होता है. जोहिर का मीनिंग क्या है पटेल? हीरे की परख समझ में आ गया. डायमंड्स का वैल्यू डैश होता है, वो भी पता चल गया. विल नो, वो किसको पता है, वो जोरी कौन है, वो मीनिंग दे देना प्लीज. If you're talking about the diamond merchant, yes, definitely. मुझे नेट पर ढूंढने दो इसका इंग्लिश वर्जन. Sir, I have one question. You might know jury means diamond merchant. Okay, means I was right. So the value of the diamond is known by only diamond merchants. Thank you so much, Patel, for your kind words. Thank you, Imran. क्या प्लेटफॉर्म है? ड्रेव. प्लेटफॉर्म का नाम ही इतना क्रेजी है, कितना स्कैम होता रहेगा वहां पे. लेट मी चेक. Filled with scam. Huh? Nice. Trusted by 30 million traders. भाई साहब. ये तो ऑक्टा एफएक्स जैसा है प्लेटफॉर्म. Trade all day. Oh my god.
योर मनी योर वे। तो क्या बोल रहे हैं प्रशांत ये? Someone created the account with my name. I tried contacting them multiple times, but they just deny quoting some rules and say you have already. कुछ नहीं है, एक मेल डाल के रख दो सेफ्टी पर्पस के लिए, saying that this account wasn't being created by me, this is not me, and the verification ID wasn't provided by me. Here is a proof of confirmation that I have been trying to contact your team from so and so date or time. Hence, I am dropping this mail. In the future, if there is any issues coming to me from your side, this will be acting as the proof of conduct which I can be using against you guys. एक mail डाल देना, regards Prashant, to their concerned mailing team. So and so. एंड जिसके साथ भी कांटेक्ट में है ना, रूल्स गील सबका नाम उसमें ऐड कर एंड क्लियरली मेंशन कर, दिस आर द पीपल्स, दिस डेट, दिस इज द कॉन्वर्सेशंस व्हिच हैज गॉन थ्रू, एंड दिस इज द मेल दैट यू हैवंट शोन एनी इंटरेस्ट nor you haven't deleted the account after saying it wasn't done by me. Hence, this is the proof of conduct that I will be using against any issues that will be generated by you guys against me. Okay? एक मेल डाल के रख देना. Okay, Prashant? Stream will be there for next 15 minutes. जो भी doubts है, please do ask. Finally, बैंक निफ्टी का भी टारगेट यहाँ पे हिट होते हुए दिख गई. बार बार में बैंक निफ्टी क्यों बोल रहा हूँ मैं? निफ्टी वो भी हो जाएगा. Thank you, sir. We'll do that. सर ये तो पूरा 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, आपने लिया क्या? Sir, I entered on my setup only one lot. Can I carry forward for the 22,900? Where you have executed the trade? Value बताओ. In the money हो, at the money में हो, OTM में हो. Entered on date of rejection. Great. So your execution is at 23,600. Yeah, 23,550.
इफ योर एग्जीक्यूशन इज एट 23,550, 23,500 के ऊपर है, वेल एंड गुड. अगर एट द मनी में है, वेल एंड गुड. इन द मनी में है, वेल एंड गुड. स्विंग कैरी कर सकते हो. ओटीएम में लेके बैठे हो तो एग्जिट कर सकते हो. अगर इन द मनी, एट द मनी में हो तो स्विंग लेके चल सकते हो. एक ही कंडीशन है, राइट? 23,350 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देना चाहिए. 22,500 यहाँ पे कोई बात नहीं है. नो वरीज, होल्ड इट. राइट, स्विंग में कैरी करके चलना. वन कंडीशन, 23,350 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होना चाहिए. ओके. सिस्टम ट्रेलिंग लेके चलना प्रीमियम में. डेफिनेटली तुम्हारा प्रीमियम उस समय पे तुमने लिया होगा 23,300, करेक्ट पटेल? या 23,350? गाइस, इंडियन मार्केट में ट्रेड करो सिर्फ इन द मनी, एट द मनी. ओह सॉरी, माय मिस्टेक. 23,500 एटीएम था. ओके, गॉट इट. एट द मनी में हो तो प्रॉब्लम नहीं है, स्विंग कैरी कर सकते. अभी वो इन द मनी हो चुकी है, डीप इन द मनी, सो वेल एंड गुड. प्रीमियम्स मेल्टिंग नहीं होंगे उतना. वीकली एक्सपायरी में लिया है. कोई बात नहीं है, वो मेरे को समझ में आ गया था. बिकॉज यू सेड डेट ऑफ रिजेक्शन ना. इमरान, एमटीएसएल फॉलो करना. एमटीएसएल एट द करंट स्टेज विल बी 3136, which is 100 pips of your execution, 110 pips. सिस्टम ट्रेलिंग 100 pips में रख लेना. Yes, following it. Thank you so much, Imran.
12 more minutes, guys. All the new members, whatever doubts you guys are having, please do ask. Stream will be there for next 10 minutes. It says max 5 days for closing action of Exness account. हाँ 5-6 दिन लगेगा ना. That's fine. But close तो हो जाएगा. विड्रॉ करने से पहले ये प्लीज मत करना, क्लोजिंग बटन के ऊपर सब मत जाना. विड्रॉ कर लो. Yes sir, after closing can I open with the same mail ID? अगर एक ही मेल आईडी है तो कोई और ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास. राइट. अगर पैसा नहीं डाले हो पटेल उसके अंदर अभी तक, देन यू कैन एग्जिट इट. पोस्ट एग्जिटिंग रीएक्टिवेटेड, कुछ नहीं होगा. बट डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी तुम्हारे मेल के इसके साथ एक्टिवेटेड में रहेगा ना. दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. थैंक यू एट प्रशांत फॉर रेजिंग क्वेरी. यस सर, आज ही डिपॉजिट करने वाला था. क्या क्वेरी रेज किया? ओके, गॉट इट. सर इतना कॉन्फिडेंस कल क्यों नहीं था? कल मेरे पास डेटा नहीं थी. आज मेरे पास कूट कूट के डेटा है. क्योंकि कल जहाँ से मैंने लाइव आया था वहां पे खुद सर्विसेज ही नहीं थे. They literally charged me for 2 hours of Wi-Fi. They charged me somewhere around like 800 dirhams. And I was like, okay. Aadhaar se register. Okay, got it.
हंस लो हंस लो। उसके बाद मैंने कार्तिक को एक जीबीपी का एनालिसिस किया था, ठीक है। वही जीबीपी का एनालिसिस के साथ मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था एंड मेरा प्रॉफिट्स रिकवर हो गया था, जो वाईफाई का था। दिस वाज द वन, एग्जैक्ट रिजेक्शन। यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था, यहाँ पे एग्जिट। कल के स्ट्रीम पे है, जाके देखना। 80% एक्यूरेसी रहेगा करके बोल के दिया था। बट मजेदार था। पर जैसे ही 800 दिरहम्स पूछा ना मेरे को, एक सेकंड के लिए के हंसी आ गई मेरे को। लूट लूट मचा रखा है वाईफाई के नाम। बट दैट्स टोटली फाइन। You won't be having that feeling of giving 800 dirhams when you earn it 100 times more in a trade. हंसी इसके लिए आई थी क्योंकि वो जैसे पूछी थी ना, so you know what it cost around 800 dirhams for 2 hours of Wi-Fi. फुल एक्सेंट मार रही थी बंदी। इतना हंसी आया ना मेरे को। Yes, I watched the stream late night last night. Yeah. कौन सा चार्ट तुम्हारा बात नहीं मानता, ये बताओ सर। एक ही चार्ट है जो मेरा बात नहीं मानता है। 90% ऑफ द टाइम मानता है, 10% ऑफ द टाइम नहीं मानता है। वो है ये वाला चार्ट का क्या, इस पे नहीं है, यहाँ पे। सिर्फ एक ही मेरा बात नहीं मानता है, ये छोड़ के दूसरा सब कुछ मानता है। एक्सेप्ट दिस, ईच एंड एवरी चार्ट वर्क्स। 90% काम करता है ये, दूसरा 10% बोलता है कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं तुम्हारा। दिस इज द ओनली चार्ट। एक मैजिक दिखाता हूँ, ठीक है। ये भी बीटीसी है, ये भी बीटीसी है, करेक्ट। द सर्कमस्टांसेस देखो कितना डिफरेंस है इसमें और इसमें। कहा गया। मजेदार है बट ये, इसमें तुम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते क्या होने वाला है, क्योंकि कब वॉल्यूम आएगा कब वॉल्यूम जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट ट्रेड दैट।
Excuse me. ओके, जैसे कि आप लोगों के पास कुछ डाउट्स नहीं है, trade fearlessly, be in the directions of the math, following the proper risk to reward, trade emotionlessly, जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. Protect your capital. मिलते हैं शाम पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. नितेश साइनिंग ऑफ.